Good morning, friends. Welcome back to my channel, Maths and Fun with Poonam Ma'am. So, class, which chapter is going on? So, decimals is going on, decimal is going on, and we have already attended two sessions of decimals where in first session I have taught you that why decimal is important in our real life, and in second session of decimals we have learned how to read decimal number or how to convert a decimal number into fraction number. In this third session of my decimals, we are going to learn how to compare decimal numbers. Okay, so this is again very important. Till that time, you won't be able to identify the which decimal number is bigger. We cannot solve it. So let's begin the session. For example, it is very simple to compare that which number is bigger, right? So 73 is bigger than 37. They are whole number, and this we have been learning since long. We can easily identify. But when the number will become like this 7.3, 7.13, then which will be bigger? How will you identify? That we need to learn. So here an important role of like decimals take place. So what is like decimal? What is the concept of making them like or unlike? ये two words क्या है? So like says making number of digits same after decimal. Okay, मतलब if here I have two digits after point or decimal, I have to make them like here also, in this number also. But here if I see I have only one digit is matching, ठीक है? But on the next place there is nothing, यहाँ पर है question mark. But here we have one more digit which is 3. तो अब ऐसे में help कौन करेगा? Who will take the place of this question mark? तो हमेशा याद रखें, whenever such kind of situation will arise, 0 will come and help you. So, by putting 0 here, I can make the places like after decimal. So now, like का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 1 3 है तो here should be 1 3, नहीं. We are talking about like in the sense of equal number of digits. जितने डिजिट इस डॉट के पास है उतने ही डिजिट्स इस डॉट के पास भी होने चाहिए. ओके, सो हियर वी कैन सी वी हैव 2, तो यहाँ पर भी 2 बनाना है. तो जितना मैक्सिमम डिजिट होगा उतने ही डिजिट्स बाय पुटिंग 0 वी विल मेक. ओके, so now we can easily see this is 7.30, 7.13. Now as I told you, we always compare place wise. So this is our ones place, you can see this is same. तो अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पा रहे that which side is bigger. Moving on to 10th place. So after digit, after decimal, first digit is 10th place and it is also 10th place. तो ये है 3, ये है 1. यहीं पर आपका फैसला हो जाता है, यहीं पर आप डिसाइड कर पाते हैं the 10th place of this number is bigger than this 10th, so this is bigger. This is how we can easily compare. Okay, let's take one more number. For example, I have 9.014 and here I have 9, only 9. For example, only 9. I'm taking a whole number. भाई अब कैसे पता लगे ये तो only 9 है, this is not a decimal number. मैम सिखा रही है decimal numbers में comparison, कैसे पता लगेगा? बहुत easy है. तो अब की बारी 9 की हेल्प खाली 0 देने से नहीं करनी है, अब की बार तो उसके पास डेसिमल भी नहीं है. सो यू नीड टू टेक डेसिमल ऑल्सो. ओके, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टेकिंग डेसिमल. तो अभी क्या करें, चलिए ये रहा आपका डेसिमल, आपको भी देना पड़ेगा बिकॉज ही इज नॉट इवन हैविंग डेसिमल. अब क्या नहीं है, 3 डिजिट्स है, यहां तो कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग. क्या करें? सो डेसिमल वो तो आपको देना ही है क्योंकि वो यहां भी नहीं है. अब कितने डिजिट्स देने हैं? वी हैव टू गिव 3 डिजिट्स एंड इन दिस केस ओनली 0 विल कम एंड हेल्प. कोई और डिजिट नहीं ऐड कर सकते, किसी और नंबर को आप नहीं बुला सकते, दैट वुड बी रॉन्ग. सो बाय एडिंग 0 वी हैव मेड नंबर ऑफ प्लेसेस सेम, number of
डिजिट्स सेम नहीं करना है, प्लेसेस को लाइक करना है। जितने प्लेसेस मैक्सिमम यहाँ पर हैं उतने ही प्लेसेस आपको यहाँ भी ऐड करने। तो चलिए लेट्स कंपेयर। दिस इज वंस प्लेस, दिस इज वंस प्लेस। टिल हेयर वी कैन नॉट डिसाइड विच साइड इज बिगर। यहाँ चलते हैं। दिस इज 10th प्लेस, दिस इज ऑल्सो 10th प्लेस। ठीक है, तो 0 0 अभी भी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है, बोथ आर सेम। मूविंग ऑन टू 100th प्लेस। ठीक है, moving on to 100th. Okay, I'm not writing completely. You can understand, we have learned the places. So 1 0 yahi par you can decide that this side is bigger. Okay, so this is how we can learn how to compare two decimal numbers by making them like एक और टर्म है unlike. मैम ने unlike तो बताया नहीं, तो जब तक आपने 0 नहीं लगाया था वो सेम नहीं थे, they were unlike, है ना? They were not equal after decimal. But now, after giving them zeros or after placing zeros after point, now they are alike and you can easily compare. So that's it for today's session. We will meet in our next session where we will be learning the next concept. Till the time, I request you to revise fractions and decimal like we have done till now. So that's it. Bye-bye.